Hello students, in this video we will solve question number 1 of exercise 1.3 class 11th chapter number 1. So here we have to make correct statements by filling in the symbol whether a set is a subset or not a subset of the given set. तो यहाँ पे हमें ये symbols fill out करने हैं in this question. So I'll just directly explain and fill in the symbols. So if you see in the first part we are given we have to check whether these two sets, whether this is a subset of this set. So we will check element by element. We know 2 belongs to this set, 2 is here also. 3 belongs to this set, 3 is here also. 4 belongs to this set, 4 is here also. So every element of first set is a element of second set. So first set is a subset of second set. Then we will check part 2. So we know we are given that A is part of A belongs to first set, but A does not belong to set another set. So this means this is not a subset of second set. Then X is a student of class 11th of your school. X is a student of your school. Of course, every student who is part of your class 11th will be part of your school. So हर बच्चा जो इस सेट का पार्ट होगा, फर्स्ट सेट का, वो सेकंड सेट का भी पार्ट होगा. So in this case, this is a subset of second set. Next, X is a circle in a plane. And then X is a circle in the same plane with radius 1 unit. लेकिन जो हमारा फर्स्ट सेट है इसमें तो 2 यूनिट ऑफ रेडियस का भी सर्कल हो सकता है, 3 यूनिट का भी हो सकता है, लेकिन सेकेंड सेट में सिर्फ 1 यूनिट का सर्कल गिवन है. सो इन दिस केस ये वाला सेट, सेकेंड सेट इज अ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, बट फर्स्ट सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट. ओके. देन फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड सेकेंड सेट में x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन. ऑफ कोर्स नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट विल बी पार्ट ऑफ दिस सेट बिकॉज इसमें सिर्फ ट्राइंगल्स है और इसमें सिर्फ रेक्टेंगल्स है. सो इसमें भी हमारा सिंबल आएगा इज नॉट सबसेट वाला. Then sixth part, x is an equilateral triangle in a plane, x is a triangle in the same plane. इस केस में this is a subset because all equilateral triangles are still triangles, so all of them will be part of this set. Then seventh part, we are given x is an even natural number and next में we are given x is an integer. So yes, this is a subset of second set because every integer integers can be negative as well as positive. ठीक है. और all the natural numbers are integers. ठीक है. So even if it's an even natural number, it will be part of an integer set.